And welcome back, friends, to another episode of Golden Whispers because Usha inspires aspirations. Friends, this is a series of 2 to 5 minute series of daily reflections that aspire to ignite your passions, broaden your horizons, and guide you towards a life filled with a purpose. So get ready to be uplifted and motivated every day with Golden Whispers because Usha inspires aspirations and cultivate a journey of personal growth together. ये श्रृंखला आपकी प्रेरणाओं को जगाती है और आपके उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर मार्गदर्शन कराती है। ये एक कोशिश है। दिस इज एन एफर्ट सो एज टू इम्प्रूव ऑन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऑन योर सेल्फ डेवलपमेंट। सो टुडेस टॉपिक इज फ्रेंड्स, फोकस ऑन सॉल्यूशंस। हम लोग को काफी आदत होती है, वी गो ऑन हार्पिंग अबाउट आवर प्रॉब्लम्स ओनली। मतलब प्रॉब्लम आ गया, वी आर ऑलवेज डिस्कसिंग ऑन द प्रॉब्लम्स, ऐसा हो गया वैसा हो गया, वेयर आर द सॉल्यूशंस? No, we are not even thinking of that. That is the main problem. Problem सबको है, किसको नहीं है? हर एक को है. But the attitude or the focus to solve the problem, that decides what you are thinking about or whether your thinking is in the right process or not. Many a times we are harping on the problems only. ये किसने किया, वैसे हो गया, he didn't do the right thing, he was to do the things and all this. We are blaming, we are passing on the blame, but where is the solution? So the thought process is in the wrong end. When we are focusing on the problems only, how are we going to find the solutions? We are blaming others for the issues that has been created, or that the life has posed the challenges too. नाउ अगर लाइफ ने इस चैलेंजेस दिए हैं तो हम बोलते हैं क्या तकदीर है मेरी, क्या कर सकता हूं, भगवान ऐसे ही है, मेरे साथ ही अन्याय होता है ना। दीज आर द कॉमन थिंग्स वी आर टॉकिंग ऑफ। व्हाट इज द ट्रुथ? लाइफ इज पोजिंग challenges to everyone, friends. No one is an exception. No one, not a single person. Everyone has got his or her own problems. So instead of harping on the problems and blaming द एंटिटी, म्हणजे हम भगवान को बोलते हैं ना कि अरे क्या भगवान, अभी तूने मेरे साथ अन्याय कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। शायद भगवान कुछ आपको मार्गदर्शन करा रहे हैं। दैट मे बी द वे दैट यू थिंक ऑफ योर हाउ टू फाइंड द वे आउट फ्रॉम दिस प्रॉब्लम्स। दैट इज व्हाट ही माइट बी थिंकिंग ऑफ, बट यू आर ब्लेमिंग हिम। और वो भगवान ऊपर बैठा भी सोच रहा है क्या इंसान है, माय बेस्ट क्रिएशन। Now, instead of thinking of the solutions, he is again blaming me. I am there to help him. Just he has to move further towards the solution, and I will guide him towards the success. That is what he might be thinking. हो सकता है ना कि भगवान भी सोच रहा होगा कि मैंने तुम्हें एक दिमाग दिया, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, 2 आंखें दी, सब तो दिया मैंने, इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो? अब ये भी भगवान ने ही करना है, तो जिंदगी आपकी है, कैसे जियोगे? So that is the issue. Hence, focusing on solutions means directing your energy and attention towards finding answers and overcoming challenges rather than dwelling on the problems. सिर्फ प्रॉब्लम है, मेरी तकदीर ही ऐसी है, भगवान ने ऐसा किया, वो अच्छा नहीं था, ये अच्छा नहीं था, सब बम बोल सके, प्रॉब्लम वहीं पर है, सॉल्यूशन निकाला ही नहीं। दैट इज द प्रॉब्लम. So it involves adopting proactive mindset that seeks to identify actionable stages or actionable steps and strategies to resolve issues effectively. You should have thought process. चलो problem आ गया. There are 2 ways you can tackle it. Either find the ways, plan out the steps, plan the strategies to come out of that problem, or sit on the problem, harping about the problem, blaming every other person than yourself and the God also. You are well aware that no revolt is going to come, hence you are safe. कोई आपको पूछेगा ही नहीं ना, अरे तुम प्रॉब्लम पे बैठे हो, सॉल्यूशन क्यों नहीं ढूंढ रहे हो? तो ब्लेम कर दिया, रोना धोना हो गया, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, हो गया, प्रॉब्लम वहीं पर है.
So friends, you have to concentrate on solutions. You have to shift from problem oriented approach to solution oriented approach. So you have to look constructively towards the problem, that is towards the solutions for solving the problems, that is forward looking. And you cannot drive a car by looking at the rear mirror, वो तो देखना ही पड़ेगा, but you have to move forward, so you have to look forward. The importance of focusing on solutions lies in the ability to foster resilience and progress. You should have that attitude, नहीं मुझे करना ही है, प्रॉब्लम्स आए ठीक है, सॉल्यूशन मैं ही निकालूंगा, because you are aware in what circumstances you are aware what strengths and weaknesses you are having, so you have to take efforts to navigate your life through the challenges. Success is yours, friends. No one can stop you from becoming successful if you are having an outlook to solve the problems. ना कि ब्लेम करते रहो, ये ब्लेम है, वो अच्छा नहीं, इसने प्रॉब्लम किया, वो अच्छा नहीं था, नजर लग गई, कॉमन है ना ये सारे डायलॉग्स हमारे घर में भी। लोगों को मेरा अच्छा दिखता, मतलब दे आर नॉट हैप्पी विथ माय गुड हैपनिंग्स, ये हम कॉमन बोलते हैं। क्यों लोग क्यों आपके तरफ देख रहे हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। यू शुड बी वरीड अबाउट योर फ्यूचर। तुम तुम्हारा काम करते रहो, बढ़ते रहो। द पीपल विल स्टार्ट टॉकिंग, नाउ दे विल स्टॉप टॉकिंग ऑल्सो। अब जब बढ़ते ही जा रहे हो तो क्या बोलेंगे? अभी पहले तो बोलते थे तो नजर लग गई, चलो फिर भी बढ़ गया, लोगों ने बुरा सोचा फिर भी बढ़ गए। लेट द सक्सेस स्पीक फॉर योरसेल्फ। Why are you harping on the problem and blaming wasting your time and blaming others people? लोगों को लोगों के बारे में सोच के, या लोग ऐसे बात कर रहे हैं, वैसे बात कर रहे हैं, इसकी वजह से मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा है, यह आप बोल रहे हो। Why not concentrate on yourself? खुद की तरफ ध्यान दो, प्रॉब्लम सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दो, बढ़ते रहो। धीरे धीरे सारी ये आवाज, सारे रेजिस्टेंस बैठ जाएगा। नो वन टू रेजिस्ट यू नाउ, सो ये रीजनिंग भी चला जाएगा। सो focusing on solution is a crucial habit for personal and professional growth. When you are concentrating on your development, your life, irrespective of what others are saying, irrespective of what is happening in others' lives, we should be least bothered. They are taking care of, everyone is taking care of his or her own life. The people who are wasting time thinking of others, they are wasting their own future. They are compromising with the fortune of their future. So why worry? Let them talk. Let your success make the noise. Let us not sit on the problem and harp about the problem, rather find out a solution to the problem and move forward. Challenges are there. Have the resilience to move on through the challenges, to be successful. And you will realize that the people whom you were blaming are now praising your success. Hence, friends, let the success make the noise. Don't sit on the problem, harp about the problem. Use your strengths. Work on your weaknesses. Find a solution to the problem that has come. The life is going to pose challenge every minute. And the people who are planned, they are more successful than an unplanned person. Unplanned persons cannot bear the burden of the challenges. He succumbs to the challenges. अचानक कोई प्रॉब्लम आ गया, जो अनप्रिपेयर्ड आदमी है, ये सक्सेस की तरफ देखने के बजाय प्रॉब्लम की तरफ देखने लगता है। और जो प्लान्ड आदमी है, जो प्लान करके अपने जीवन बिता रहा है, he is very strong enough to take on the challenges. So friends, focus on the solutions, not on the problems. Be solution oriented and you will be successful. No one can stop you to becoming a successful person in life, provided stop blaming others. Focus on your life, your future.
Stop wasting your time on gossiping on what's happening in others' life. That is more important. That will help you to focus on your life, to focus on your solutions to the problems that the life is posing to you, rather than blaming others or harping on the problems. A sign off on this note, friends, and we meet again in another episode of Golden Whispers because Ushi inspires aspirations. Till then, bye bye. Enjoy the day, friends. Enjoy the life. It is a one time activity. Do enjoy.